This particular session is for chartered accountants, and this is for group task session. So all of you are already aware about the group task. It is all about talking and providing the solution to something. So let me tell you, the marks will be given on the basis of how good solution do you provide, how good are you in talking to others, how smoothly you talk to others. These are some parameters on the basis of which you are given the basically credit and marks. So if you speak, participate, and if you give relevant points, then certainly you get score. If you speak though you don't give relevant points, even then you get selected. If you don't speak, you are out. If you speak less and irrelevant, you are out. You don't let others speak, again you are out. Others are speaking something else and you are on other side, you are out. These are the rules of group task. You need to basically be part of the group. You can have a difference of opinion, but at the end you have to come on the same platform. So this is something which you need to keep in your mind. These are the very, very important rules. To win any game, you should know where you can be out. So I'm telling you those rules in group task where you are out. अगर आपने बात नहीं किया तो आउट. अगर बाकी लोग कुछ और कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और आप बिल्कुल अलग स्टैंड लेके खड़े हो, तब भी तुम आउट. आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हो, तब भी तुम आउट. कम बात बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं बोल रहे हो, तब भी आउट. So you have to participate, you have to speak, and you need to keep in mind that you have to speak as a group. So you can give your different opinion to the members, but if they don't agree to you, and if you find that majority are not agreeing to you, then you just join them and become the part of group. That is what you have to do. Now I'm going to give you one task here, and then you will be given some time, 2 minutes, to think over it, and then we start the discussion. And another very important thing, you will be given pen and paper. So make it practice. You start doing the practice, that whatever important point is coming from any member, you are jotting it down. Why? Because at the end you should give your a solution through consensus. That is what is to be done. So I am providing you now this I think this task. It is coming on your screen. This was actual task asked last year in IOCL interview. So here it comes. Maybe it is visible to you. This was the actual IOCL task last year, and we are doing it now. So this is the task. You are working for sports ministry in India, and you are given the task to promote the sports culture in our country. We target to get more international medals in games like Olympics. How do you proceed from here? You have to suggest your steps. So 2 minutes you will get before you start.
Okay, so I believe you have gone through this topic now, and you are ready to discuss among yourselves. So now I open the house for discussion among all of you. You may be observed, you may not be observed, but at the end, you have to give me the solution, which should be, consensus-based solution from your side. So please proceed ahead and start your discussion now. Hello friends, today our topic of discussion is we are in sports ministry and we have to promote sports. So what can be the steps we can take to promote sports? According to me, we can make sports mandatory in schools, and we can also tell the gold medalist of Olympics to visit colleges and schools so that I would like to tell other members to discuss their points. I think we first identify the problems which are facing by students to enter in the sports. सबसे पहले अपने को जरूरी है समझना कि बहुत सारे लोग इतना जब मेडल्स आ रहे हैं तो भी ये बच्चे एंटर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों उनको क्या हर्डल आ रही है इस चीज में एंटर होने के लिए, क्या कि वो जो स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल है, वो उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. क्योंकि स्कूल लेवल ये जरूरी है जानना अपने को कि स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे वो एंटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहीं से उनको मोटिवेशन मिलता है उस चीज में एंटर होने के लिए. यू आर राइट योगेंद्र, बट क्या चीज होती है ना कि पेरेंट्स उनके बच्चों को क्या करते हैं कि पढ़ाई में की सिक्योरिटी या फिर उनके फ्यूचर की सिक्योरिटी है, वो पढ़ाई, उनको लगता है कि पढ़ाई में अगर वो अच्छा होगा तभी उनकी सिक्योरिटी होगी, बट अगर वो खेलेगा कूदेगा तो उससे ज्यादा उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा. इस वजह से वो पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स में ध्यान दे. तो हमें ये करना चाहिए कि जो एथलीट्स हैं उनके फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि तभी उनको लगे कि हमारा फ्यूचर पढ़ाई में भी है और स्पोर्ट में भी है. अगर हम इस बारे में सोचे तो हम इंक्रीज कर सकते. और वो प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कोई आइडिया है आपके पास? ये बहुत जरूरी है. ये काम मैं बताता हूँ, ये काम टीचर ही अच्छा कर सकते हैं. जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रमोट करने का काम टीचर का ही है. हमें एनकरेज करना चाहिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम होता है, ये एक्टिविटी बहुत कम होती है. एंड जो योगेंद्र आप पॉइंट बोल रहे थे ना कि ये लोग क्यों नहीं करते हैं प्रॉब्लम के, तो आई थिंक ये जो आफ्टर क्वालिफाइंग लाइक स्कूल कॉलेज के बाद कुछ लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं फाइनेंशियली, तो उसके लिए अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी पे, तो उसके लिए हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं. बट जैसे गोविंद ने कहा कि पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो एकेडमिक्स पे ज्यादा फोकस करे, तो वी शुड आल्सो मेक अवेयर पेरेंट्स कैंपेन वगैरह करके उनको भी, पेरेंट्स को भी हमें कन्विंस करने की कोशिश करनी है. पेरेंट्स इंटरेक्शन सिर्फ टीचर कर सकता है सबसे पहले, क्योंकि टीचर की बात हमेशा we should go to schools and colleges and ask the teachers to बिल्कुल स्कूल लेवल पे ही अगर ये स्टार्ट करते हैं हम और छोटे छोटे बच्चों को टीचर ही समझाए, उनके पेरेंट्स को समझाए, तो टीचर की बात हमेशा जरूर मानते हैं, बहुत अच्छे से मानते हैं. स्कूल में भी अगर कोई एथलीट है तो उनका कोई परसेंटेज, उनके स्पोर्ट्स के उनका स्पोर्ट्स में जैसे परफॉर्मेंस है उस हिसाब से उनके स्कोर, जो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसके स्कोर में कुछ परसेंटेज स्पोर्ट का भी मिला दिया जाए, तो बच्चों का और पेरेंट्स का भी ध्यान जो है जा सकता है. और इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, कि जैसे कोई पीएसयू या गवर्नमेंट की कोई जॉब है तो उसमें एथलीट के लिए हम रिजर्व कोटा भी रख सकते हैं. एक्चुअली होती है पीएसयू में एथलीट कोटा होती है, लेकिन ये चीज लोगों को मालूम होती नहीं है. conduct the exams some other times for those students so that they can focus on sports as well as studies. So we should ask the teachers to encourage the students in sports way also. So Guys, I also had one point. Guys.
जो हम let me पॉइंट्स बोल रहे हैं ना, एक सेकंड सुनो, जो हम पॉइंट्स बोल रहे हैं जिन पे एग्री कर रहे हैं, आई थिंक हमें उन्हें जॉट डाउन कर लेना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहले, yes ताकि yes yes लास्ट में प्रॉब्लम फेस ना करनी और पड़े। जी समटाइम्स जी सबसे बिल्कुल। पहला पॉइंट तो हम एनकरेज करेंगे, जो प्राइवेट में तो होता ही है, लेकिन उसमें भी करेंगे, गवर्नमेंट में भी करेंगे। तो सबसे तो पहले मेरे को फिर लगता है अपने को और पहला so पॉइंट मुझे बनाना लगता चाहिए है कि एडिफाइन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी चाहिए अपने को पहले कि किस लेवल पे है, कि ये प्रमोट क्यों नहीं पा रहा, स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे प्रमोट क्यों नहीं मुझ, हो पा रहा है। तो हाँ सबसे पहले एंड प्रॉब्लम आफ्टर यहाँ से दैट आती है। विल एनकरेज। हाँ I हाँ मुझे also लगता है advise कि वहां पे इस जा कि करके मुझे कॉलेज लगता में है इस क्रेडिट चीज में सिस्टम कर देना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो कॉलेज स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाए उसके अंदर। मुझे लगता है and इस चीज में ना one more thing, इंफ्रास्ट्रक्चर and या I फिर want to बेसिक add जो one शिवा more भी thing. कुछ कहना चाहता है, uh, शिवा भी शायद कुछ कहना चाहता है। Let me speak. Actually, we हम्म। can also we need to firstly we are in the sports ministry, so we need to talk to the sports association, various association. So they need to see whatever the raw talent in the schools, and we need to give them the free coaching like this in the whatever association. So we need to take out a budget for the same, and we can spend the amount on the talent, and we even need to give the infrastructure that has been that were there to the previous medalist, and we need to again find the problems, and we to after finding the problems, if they are in any infrastructure is not available, we need to provide that infrastructure, and we can do this part also. Whatever this part also we can add. यस यस आई एग्री विद शिवा। लाइक विलेजेस में कैसे होता है ना कि विलेजेस में जो बच्चे जो है वो स्ट्रांग तो होते हैं, बट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, कुछ लैक ऑफ उनके जो चीजें चाहिए उसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो हम वहां पे फोकस कर सकते हैं कि उनको कुछ जो स्पोर्ट्स के लिए जो चीजें लग रही हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो विलेजेस में थोड़ी सी अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब सेकंड प्रॉब्लम हो गई कि अपने आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद में अपने को प्रॉब्लम होने की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, Yes, yes. इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो गई। तो तो सेकंड अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और Okay. उसके और And इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अपने we को should arrange free coaching for the students, so Yes. that यस यस they यस can, यस That has been yeah. even इंटर कॉलेज so कंपटीशन कराने चाहिए अपने को, ट्रेनिंग प्रमोट तो करना चाहिए अगर एटलीस्ट कंपटीशन Training कंपटीशन करवाना अरेंज कंपटीशन के करा कारण। सकते हाँ हैं, हाँ डिस्ट्रिक्ट ट्रेन लेवल, फ्री। स्टेट लेवल, इन सब यस हाँ पे। हाँ एंड ये मैंडेटरी होना चाहिए कि कुछ कुछ टाइम बाद हम ये लाइक बिल्कुल समझ रहे हैं ना करवाएं। आप लोग, कुछ जरूरी या है ये चीज। स्कूल लेवल से अगर स्टार्ट कराएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल एक पे, नेशनल लेवल पे, टाइम लाइन होनी चाहिए, कितने टाइम बाद ये कंपटीशन होगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज में गर्ल्स को भी मोटिवेट करना बहुत जरूरी है अपने को, वो इससे ज्यादा गर्ल्स को मोटिवेट करना जरूरी है। यस एंड फ्री ट्रेनिंग टू एथलीट्स ये प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब अगर वो रेगुलर परफॉर्मिंग है बंदा, हर यस जगह मेडल आ यस रहे हैं, तो उसको कॉलेज के बाद में, क्योंकि कॉलेज तक अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बाद में दिक्कत आती है। तो उसके बाद में अपने को जरूरी है सोचना, अगर उसने कॉलेज तक परफॉर्म किया है तो उसके बाद में उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। हम कहीं कहीं जगह जैसे कुछ रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं, वहाँ पे प्लेग्राउंड्स की बहुत कमी होती है, तो हम प्लेग्राउंड्स वगैरह बनवा सकते हैं। यस एक्चुअली ये हम इससे कर इससे सकते बेटर हैं, ऑप्शन क्योंकि बच्चों में ना जो बचपन से जो आदत है ना वही आगे कंटिन्यू रहती है। तो हम ये कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनमें उनमें अगर हम स्पोर्ट्स के बारे में उनको अवेयर करें तो आगे जाके उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट स्पोर्ट्स रह सकता है। इसलिए हम छोटे बच्चों को भी टारगेट कर सकते हैं कि वो नहीं गोविंद, स्पोर्ट्स में भी ध्यान दें। वो चीज आ गई अपनी कवर स्कूल हो लेवल पे, गई ना, जैसे हम वो कवर एनकरेज हो गई। करेंगे स्कूल। हाँ स्कूल लेवल पे करेंगे तो वो छोटे बच्चों के लिए है वो बेसिकली, हम्म। तो वहाँ Yeah. वो चीज कवर हो गई। तो बेसिकली शायद सिमरन तुमने पॉइंट नोट डाउन किए होंगे मेरे हिसाब से, स्टार्टिंग से लेकर अपनी प्रॉब्लम आ रही है और उसको हम हाँ, कैसे टैकल कर हाँ, सकते हैं। एक बार Yeah, रिपीट करते हैं। we हम्म। need mainly और मेरा एक पॉइंट है कि हाँ। जैसे ट्रेनिंग तो हम फ्री ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, बट हम जो एथलीट है तो हमें उनके डाइट पे ध्यान देना चाहिए। तो हम इस ट्रेनिंग के उनका जो साथ मिड डे मील that देते that हैं। is यस that will be Yeah. in the यस infrastructure, right? जो ये हम Whatever the वो infrastructure भी that उनको whatever हाँ वो भी उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्री। कवर हो जाएगा वो। and बेसिकली one अपने more को thing, कोच, like एक कोच की भी बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अच्छे कोच हो जो कि अच्छे मेडल आए हुए हैं जिनके, और ऊपर से उनको प्रमोट करने के लिए वो एक एथलीट कॉलेजेस में विजिट करें। जैसे कि अभी मोदी जी ने टारगेट रखा है कि जितने भी इसमें एथलीट आए हैं वो अपने अपने एरिया के कॉलेजेस में, स्कूल में जाके प्रमोट करें इस चीज को।
तो ये एक और अच्छा चीज हो सकती है। सेकंड, जो इनके कोच हुए, कोच बहुत अच्छी ट्रेंड हुए। दूसरी बात, आजकल कई जगह जो कोचेज होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं। आपने बहुत सारी न्यूज सुनी होगी ये चीज, जैसे गर्ल्स के साथ में कुछ मिस हैपनिंग, तो इस चीज से सेफ्टी का भी उनका ध्यान रखना जरूरी है, जिसके कारण इसको ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं हम गर्ल्स को। Yeah. And I want to add one more point, like, so if we give some concession in fees in case of private schools or colleges, so it might be help to encourage the students. हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है, हाँ, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स के कारण उसको अच्छे कॉलेज में जाने के लिए उसको कोटा मिले, Yeah. तो So, स्पोर्ट्स को और अच्छा प्रमोट yeah. करेंगे वो उसको। Yes. आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा कि स्पोर्ट्स कौन सा है, क्योंकि इसे ओलंपिक में होता है, बहुत सारा मल्टीपल स्पोर्ट्स होता है। स्पोर्ट डिटरमाइन करने के बाद हम लोग को दूसरा पॉइंट ये देखना चाहिए कि हम लोग को सोसाइटी कल्चर कैसा है, माइंडसेट कैसा है, और उसको चेंज किस तरीके से कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल कि हम लोग पीपल के इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, कुछ मूवी प्रमोट कर सकते हैं, जैसे चकते इंडिया प्रमोट करेंगे तो हॉकी का कल्चर प्रमोट होगा। महेंद्र सिंह धोनी से क्रिकेट तो ऐसे ही फेमस है। और कुछ मूवी को स्टेट वाइज या फिर बोल सकते किसी हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई, या हर स्टेट में कोई ना कोई प्लेयर जो सामने उभर के आता है, जो खेलता है, उसको बहुत को नहीं जानते, तो उसको प्रमोट करके एक स्टैचू टाइप से बना के अगर उसको रख दे किसी जगह पे स्पोर्ट्स स्टेडियम में, तो वहां पर देख के लोगों को मोटिवेशन आएगा, एटलीस्ट उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को। I want to add one more ये point. एक्चुअली राजीव, मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज का पॉइंट हमारी हो गई है कि हम एक्चुअली पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को एक जगह के हिसाब से हम नहीं कर सकते हैं। मतलब कि बेसिकली Yes. अगर स्कूल में जाया जाए तो बट उसको हर ऐसा चीज तो का प्रमोशन किया जाता है, हर ऐसा तो सब्जेक्ट का। बाइफरकेशन कर सकते हैं ना, कि जैसे टीम स्पोर्ट और जो इंडिविजुअल प्लेयर खेले जाते हैं, ऐसे बाइफरकेट करके दोनों हाँ, को वो जो स्कूल में हो जाती है। अगर आप कभी नोटिस करोगे तो स्कूल में ऑलमोस्ट हर टाइप का आपको गेम मिल जाएगा। फिर वो आप पे डिपेंड करता है आप किस सब फील्ड में इंटरेस्ट आपका जगता है और उसमें आप कैसे आगे जाते हो। तो मेरे हिसाब से और मेन अपना तो काम इससे ये तो है कि एरिया स्पोर्ट्स को प्रमोट रिस्ट्रिक्ट हो करना है। जाएगा ना कि आप हाँ। ये वाली, हाँ, उनको जो गेम्स हम्म। का करना है अरेंजमेंट, तो वो सबका करेंगे। बिल्कुल। हाँ, मेन अपना काम अभी है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। अपने को कोई प्रमोट करना, पर्टिकुलर हाँ, वो नहीं करना है, मेन स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है अपना जो रेस्ट्रिक्ट नहीं टारगेट है। करना है कोई एरिया। हाँ, Yeah. कोई एक चीज There is Okay, no restriction. here हाँ। I want to add one more thing, like, so along with classes, we should keep one motivational class for sports, so that student may feel like it is kind of encouragement. हाँ, ये So, वही चीज हो सकती है कि जो अच्छे कोई मेडल जीत के लाए ओलंपिक में या कोई नेशनल जीत के लाए, तो उनको एक बार विजिट करवाया जाए टेस्ट कोई के स्कूल में कुछ। पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी स्पोर्ट्स को ध्यान नहीं देंगे, कुछ स्पोर्ट्स को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि हर स्पोर्ट्स को सामने लेके आना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि जेवलिन थ्रो में अगर कोई जरूरी नहीं कि जेवलिन थ्रो प्रमोट हुआ, उससे ओलंपिक पूरा प्रमोट हुआ, ओलंपिक और भी सारे गेम प्रमोट हुए। तो मेरा कहने का मतलब वो है, यहाँ पर अगर हम जैसे पहली बात तो राजीव, मेरे को ऐसा लगता है जब खेल की भावना जगेगी ना, तो इंटरेस्ट आपको ऐसे खुद लगने लग जाएगा कि हमको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो अभी हमारा मेन टारगेट है खेल की भावना जगाना, जो कि अभी नहीं है। जरूरी चीज ये है अपने पास में। हम एक कंपटीशन रख सकते हैं जिसमें प्राइज हाँ, मनी, ये तो हाँ, वो ये स्कूल टारगेट ये लेवल हो गया पे, अपना, स्कूल लेवल पे हो होगा। गया ये हमारा। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे हम टाइमलाइन रखेंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, मैंडेटरी स्टेट होगा। लेवल, नेशनल लेवल, ये चीजें हमने हाँ। कंपटीशन वाली बात हो गई। तो मेरे सबसे अपने पॉइंट हो गए, और शायद सिमरन ने लिख लिया हाँ, मेरे हिसाब आई से। थिंक इतना बहुत है, एक बार ही बहुत है, टाइम हम हो गया है। रिपीट कर सकते हैं। हाँ हाँ, एक बार बिल्कुल। रिपीट कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर देना हाँ, है। पहली बात तो हम Oh. आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, yeah, कि we अपने should की identify प्रॉब्लम the कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे आ रही है। हाँ, और उसके बाद में अपने को ये देखना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी आ रही है बहुत जगह पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस Yeah. प्रॉब्लम में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम आएगी। और फ्यूचर सिक्योरिटी, और उसके बाद हमें हाँ, स्कूल्स फ्यूचर में, सिक्योरिटी भी देना। कॉलेजेस में कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए एनकरेज हमको। करना चाहिए। यस, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करा सकते हैं हम। हाँ, Yeah, उनको yes, कुछ scholarship. कंसेशन देना चाहिए बहुत coaching जगह पे। centers also. हाँ हाँ, अगर प्रॉब्लम वो में क्या क्या आइडेंटिफाई हुआ है, क्या पॉइंट रिपीट कर दोगे प्लीज? हाँ, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि अगर कि सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उनको मालूम नहीं होता स्पोर्ट्स के बारे में। तो स्कूल लेवल पे हम ये बताएं टीचर्स को कि आप ये बच्चों को समझाओ कि स्पोर्ट्स अपने लिए कितना अच्छा है।
और ये पेरेंट्स को भी समझाओ, क्योंकि मेन मतलब कहाँ पे आती प्रॉब्लम है यहाँ पे आ रही है ना कि लोग क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हाँ। वो अवेयर नहीं है। तो वो हाँ। अवेयरनेस के लिए आई थिंक दिव्या ने एक अच्छा पॉइंट ऐड किया था। एक तो हम स्कूल्स को एनकरेज करेंगे, और सेकंड जो पेरेंट्स के लिए है वो भी हम कैंप वगैरह अरेंज कर सकते हैं यस यस ताकि यस उन्हें आई आल्सो ऐड वन पॉइंट कि कॉलेज में क्रेडिट सिस्टम रख देना चाहिए स्पोर्ट के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये अच्छा है। स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाए। हाँ, स्कूल में तो अच्छा है। एक जैसे स्पोर्ट्स सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए, और जो एक लेक्चर जो है, जैसे सब्जेक्ट्स के लिए हर सब्जेक्ट के लिए लेक्चर होता है, वैसे वो तो स्पोर्ट्स के लिए They वैसे should give रहता है, some आई time थिंक for वो sports सब्जेक्ट also. रहता है। यस फिजिकल एजुकेशन For होता है, 11th 12th में होता है, they लेकिन वो should give some पर वो एक्चुअली क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन रहता तो है लेकिन कई बार मैंडेटरी नहीं ये होता है। सिर्फ मैंडेटरी नहीं हाँ, वो होता है, मैंडेटरी नहीं होता। वो सिर्फ एकेडमिक्स वाले उसपे। जो टीचर्स होते हैं वो फिजिकल एजुकेशन वाला पीरियड ले लेते हैं क्योंकि हाँ, खाली बट रहता है। हाँ, कभी कभी तो मैंडेटरी होना कभी तो चाहिए जिससे कि वो ना ले सके। हाँ। कभी कभी तो ऐसे होता है कि सिर्फ वो क्लास तो ब्लैंक ही जाता है, मतलब कोई आता नहीं है, स्टूडेंट को जो करना है वो कर लेते हैं, जब स्पोर्ट्स भी नहीं होता है और एकेडमिक्स भी नहीं होता है, तो वो चीज ना मैंडेटरी होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये छोटे लेवल से होनी चाहिए, 11th 12th में नहीं होनी चाहिए सिर्फ, यस, स्कूलिंग से कॉलेज तक, मतलब तो छोटे गाइस लेवल से सबसे होनी चाहिए, मतलब एक स्कूल बार के मैं साथ। हाँ, रिपीट करूं, उसके बाद कोई बिल्कुल अगर पॉइंट ऐड करना चाहेगा तो बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, तो उसके लिए हम एनकरेज करेंगे स्कूल्स को, कॉलेजेस को, एंड पेरेंट्स के लिए हम कैंप्स वगैरह की अरेंजमेंट करेंगे। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, आइडेंटिफाई करके किस एरिया पे कर एक सकते हैं, कहाँ पर बजट भी बनाना पड़ेगा अपने को मेरे हिसाब से, बीच में बजट। Identify the इंफ्रास्ट्रक्चर को देख talent के in. देना होगा ये। Yes, we need to identify the talent from the various schools, so we can provide the टैलेंट infrastructure. आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग हम Accordingly, इंफ्रास्ट्रक्चर we can डेवलप कर provide सकते the हैं। infrastructure. We need to develop infrastructure, and we need to provide स्कॉलरशिप the free प्रोवाइड education. कर सकते हैं, Yeah, बिल्कुल, free और स्कॉलरशिप जिसने या फिर स्कूल लेवल free पे coach. और कॉलेज लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया है, जो आगे जाना चाहता है, तो उसके लिए हम स्कॉलरशिप दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। Scholarship and infrastructure in ये the point association. And reservation also in jobs and yes even yes Yes, government for athletes, seats. yeah, तो वो actually, कैसे कर सकते हैं अगर वो सही पूछते बोलेगा। हैं तो, लाइक रिजर्वेशन के लिए उनके क्या पास We should सर्टिफिकेट्स रहेंगे ना, can discuss स्पोर्ट्स with कोटा them. जैसे जो भी स्पोर्ट्स में वो उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, उसका सर्टिफिकेट तो रहेगा ना उनके पास, तो उस बेसिस पे एक्चुअली उनको नेशनल जो खेले हुए होते हैं, Yes. जैसे रेलवे मिनिस्ट्री करता है, तो खेले हुए होते हैं, नेशनल खेले हुए होते हैं, उनके एक सर्टिफिकेट के कारण उनको कंसेशन मिलता है, उनकी जॉब में Yes. मतलब कि मार्क्स में रिजर्वेशन मिलता है। रेलवे जैसे प्रमोट करता है, तो वैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में भी प्रमोशन होना चाहिए चीज का। रेलवे इस चीज पे ज्यादा ध्यान देता है, स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स पे, स्टेट में भी नहीं बाकी जो डिपार्टमेंट। स्पोर्ट कोटा, स्टेट में भी जो स्पोर्ट कोटा उनको 2% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। हाँ, तो ऐसा तो मतलब हम रिजर्वेशन PSS रख में भी- सकते हैं जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि उनके लिए जॉब सिक्योर हो सके। एंड एक दूसरा वो जो जो And स्पोर्ट्स we में रहता है can तो use this alternative also, like advertisement with the players who won medals. हाँ, अभी जैसे नीरज अरोड़ा को पर एडवर्टाइजमेंट अच्छे मिल रहा है, तो वैसे अपने को कोशिश करनी चाहिए जो मेडल और जीत के लाए उनको भी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा अच्छा मिले, बजाय एक्टर्स के बजाय ये चीजें इनको मिले। एक्टर्स जैसे प्रमोशन करते हैं एड्स का, उससे बजाय हेल्थी चीजों का इनसे करवाया जाए तो ज्यादा उनका प्रमोशन होगा। स्पोर्ट्स प्रमोशन की। Yes, yes. हाँ बिल्कुल। That celebrities that whatever हाँ. the Neeraj, they need to even go to the association, and they need to find out that talent whatever the earn, and extra care to be given to the persons whom they are thinking that gold medal, and we need to give more care for them, and diet and free education, whatever the scholarship you are thinking. So we can add this for all the अब वो points. स्कॉलरशिप या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो I would कवर हो like- जाएगी वो चीजें। Yes, काम yes, एक और to कर add सकते one हैं। And point. one more thing, like State we wise- should not stop promoting this, because we should continuously doing our thing so that the people एथलीट हैं will. जो आई थिंक है कि स्टेट वाइज हम लोग को गोल्ड मेडली जो प्लेयर है सबको एक ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। उससे भी क्या होगा कि वो स्टेट में वो एक जो भी ब्रांड एम्बेसडर है वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को एटलीस्ट प्रमोट कर देगा, एटलीस्ट वन ही सही, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो प्रमोट है वहां पर। हाँ बिल्कुल, प्रमोशन it's के लिए बहुत जरूरी है। जो गवर्नमेंट की जो जितने भी एड्स रहते हैं उसमें मैक्सिमम अपने को उन्हीं को लेना चाहिए, एक्टर्स की बजाय इनको लेना चाहिए। मुझे हाँ, ये एक तो पॉइंट ज्यादा ऐड actually करना है। this has हाँ, been होता implemented in ये जो various states also. प्रमोशन में Whatever the if a person is winning the gold medal, if we take that
whatever the celebrity that has been got gold medal, they will be given a group 1 service, and also they will be given the sports ministry head, like that a position will be given. These types of things we can we can advertise their achievements, so the students will be interested in joining, and so with the association on all this we can do better. So आई थिंक और कर सकते हैं ना? फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन को थोड़ा ज्यादा प्रमोशन के लिए इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे कि फीमेल्स का जो है वो जो स्पोर्ट्स में थोड़ा एनकरेजमेंट थोड़ा ज्यादा हो। वो मेरे yes, हिसाब I से was- सारा I अपन was- तो अगर हम सिक्योरिटी sports में कैसे, सिक्योरिटी के लिए नहीं, कैसे अगर- सोच Yes. सकते हैं? हम here like अगर स्पोर्ट्स see, को we प्रमोट are करेंगे तो focus- उसमें देखो ऐसा मेरे को लगता है कि सारे लोग ही कवर हो जाएंगे। हम कोई एक पर्टिकुलर एरिया को वो नहीं कर रहे टारगेट, हम स्पोर्ट्स पूरे एज अ होल को कर रहे हैं, जिसमें कोई भी जेंडर हो वो भी इंक्लूड है और कोई भी स्पोर्ट्स हो वो भी इंक्लूड है। Yes. पर्टिकुलर मेन अपना एरिया है तो- स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। हम लोग को Divya is telling to प्रमोट कर सकते हैं हम लोग, जस्ट लाइक एफएम हो गया, इसके अलावा टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, यूट्यूब हो या फिर गया। एक अच्छा इनिशिएटिव है जो मेरे को ऐसा लगता है बहुत अच्छा रहेगा, जैसे रोड के नाम जो आजकल होते हैं तो वो स्पोर्ट्स फेयर के नाम पे रखनी चाहिए। एक जो कुछ एरिया के जो रोड बनती हैं उन एरियाज के जो रोड के नाम होते हैं, जैसे कि अभी कुछ हायर जो टैक्स पेयर हैं उनके नाम पे अब रोड के नाम रखने लगे हैं, तो ये इनके लिए भी रखे जा सकते हैं। हाँ ये भी सही है। Yes, I agree I with you. want to add one more थोड़ी thing. होता है। I want to add one more. Yeah. कभी See, कभी ना कोई जो एथलीट है कभी इंजर हो जाता है, इंजरी हो जाती है उसको, तो उसके हॉस्पिटल का खर्चा, उसके जो अगर वो परमानेंट इंजर हुआ है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। आई हाँ, ये थिंक वो जरूर होता अच्छा होगा, better line वो होता ही insurance है। एक्चुअली दिस इज द रीजन Actually- स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो रिटायर होने के बाद कई बार कुछ न्यूज़पेपर में मैंने ऐसी न्यूज़ पढ़ी थी, जो जिन्होंने मेडल जीते हैं आज उनके पास मतलब खाने के लिए भी वो है, मतलब बहुत ज्यादा बिल्कुल That- है, ये that- चीजें हुई that है। may- इसलिए स्पोर्ट्स that में may लोग not आना be नहीं true. चाहते हैं। Actually, if a person is getting a gold medal on anything, he'll be given a job in the government job, like a group 1 service. If you take the but जो example of the PV पेंशन Sindhu. का अरेंजमेंट कर सकते हाँ, हैं बट सभी After एथलीट retirement. हैं, PV Sindhu. हाँ पेंशन का We कर can, सकते we हैं। can, yes, yes. see, I बट want to सभी say something. एथलीट हैं जो आई थिंक जो गोल्ड दीपा भी कुछ मेडल, कहना चाहती हैं एक बार। Yeah. See, here everyone is focusing on students, the people who are coming into schools. So we should have our focus on the person, like some children from poor families. So they may not come to school, but they have talent. So we should focus on them also. We should encourage them, and we should arrange like schooling and accommodation, food, everything, and we should encourage them. So एक्चुअली मेरे हिसाब से तो that- जैसे कि गवर्नमेंट की जो स्कूल होती है फ्री में ही प्रोवाइड करवाती हैं एजुकेशन जो होती है, So, तो अगर हम गवर्नमेंट स्कूल को टारगेट कर ही रहे हैं तो वहाँ उसके पे लिए मेरे हिसाब हम से वो एक cover हो चीज कर जाएंगे। सकते हैं, कुछ पेरेंट्स अवेयर नहीं होते हैं, फ्री होने के बाद भी एडमिशन नहीं दिलाते हैं, तो उसके लिए हम अवेयर कर सकते हैं उनको, वो फिर पेरेंट्स को एजुकेशन में अवेयर कर चला गया सकते वो हैं मामला स्कूल कहीं में। ना कहीं, हाँ ये हो जाएगा। वो मामला वहीं क्या चला वो गया, अगर हम लेकिन लोग अपना वैसे law हमें pass कर दें? इनफ पॉइंट्स मिल गए हैं इनफ यार। पॉइंट Yes, मिल yes, गए हैं yes. तो कंक्लूड कर लेना चाहिए अपने को। और मेरे हिसाब से क्या हो अगर आपके हम पास लोग राजवीर हो रहा है, एक लॉ पास कर दे कि मतलब सारे जो बड़ी बड़ी टॉप 500 कंपनीज है इंडिया में, सबको एक ना एक स्पोर्ट्स को स्पॉन्सरशिप करना होगा, और उससे क्या होगा, एक फंडिंग भी आ जाएगा सोसाइटी में एक स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि एज अगर देखा जाए गवर्नमेंट पे सारा बर्डन तो आ नहीं पाएगा, गवर्नमेंट अकेले कुछ कर नहीं पाएगा, पब्लिक के पास भी इतना पैसा नहीं होगा वो खुद से इनिशिएटिव लेके स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाए। अगर ये टॉप 500 बिजनेस आ CSR में तो ये CSR CSR में में इंक्लूड हो हो सकता है। इंक्लूड कर सकते हैं या होता हाँ, है? में- जो CSR होता है, CSR के अंदर हम ये चीज इंक्लूड करवा सकते हैं कि जो उनका पैसा उठाए वो CSR की तरफ से आए तो अच्छा रहे। Okay, क्योंकि somebody CSR तो wants एक to कंपल्सरी conclude चीज है। now? You are ready? आई थिंक Actually, Simran should proceed for this. So I would like to conclude on behalf of my team. तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई थिंक इज लैक ऑफ अवेयरनेस। लोग अवेयर ही नहीं होते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एनकरेज कर सकते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कि स्पोर्ट्स को मैंडेटरी बनाया जाए। एंड उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन किन एरियाज में ज्यादा टैलेंट है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा सकते हैं जो
स्कूल पास आउट हैं या फिर कॉलेजेस के पास आउट हैं, तो कुछ लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड वन थिंग, जो फिजिकल सब्जेक्ट होता है वो मैंडेटरी करा सकते हैं स्कूल्स में। एंड आफ्टर दैट जो एडवर्टीजमेंट जो एक्टर्स वगैरह करते हैं, तो इसके लिए हम ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को। एंड जो कुछ रोड के नेम है उन्हें स्पोर्ट्स के नाम पर रख सकते हैं, और रिटायरमेंट के बाद वो सिक्योरिटी देने के लिए उन्हें हम पेंशन दे सकते हैं। एंड कुछ लोग इसलिए भी नहीं एनकरेज करते खुद को स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए, क्योंकि उन्हें जॉब की सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तो उसके लिए हम रिजर्वेशन रख सकते हैं, लाइक जिसने स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनके लिए हम जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई कोटा रख सकता है, रिजर्वेशन कोटा। एंड उसके लिए एंड आफ्टर दैट CSR में इंक्लूड कर सकते हैं इसको, कि आप स्पोर्ट्स के लिए भी फंडिंग करो। जो पेंशन है वो CSR के थ्रू हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, CSR में ये अमाउंट रख सकते हैं। हाँ, तो वो फंडिंग हो जाएगी ना CSR से। CSR के एंड थ्रू आफ्टर रिटायरमेंट तो हम उनके लिए पेंशन का अरेंजमेंट कर सकते हैं। So that's all. Okay, so I must say that you people have come out with the good points this time. I mean, the same session I was conducting just now, I mean, on the same point. So in the previous group task, the students could not give very good points. And I'm very sure you have not heard that, because I gave almost the same points there also. But you have given good points, I must say that. Let me tell you, I will be discussing about this, but let me tell you about your entire performance. So in your group, there were a couple of students. I mean, there were some students who were speaking, like Yogender was talking, and then Rajveer was talking, and then Divya was talking, Govind also participated, Simran was talking. So Shiva and Deepa talked less, and Rameshwar also. So I know that Deepa can talk and Shiva can contribute, but you talked less. In fact, very relevant points were given by Govind. Govind gave very relevant point. He said, okay, future security is not there. Parents don't want their kids to be in sports. Athletes don't see their future, in this particular. So we need to make this sports compulsory subject, something like that. So Govind was giving good points, but then Govind, if you observe your recording, you will find that I was silent for a very long time actually. So I gave good points, but I was silent for long. So Govind is a case where if observer will listen to him, the probability of which is very high, then he will give him credit. Why? Because he gave relevant point, though he spoke very less. So I was telling you, there's a one category who speaks less but speaks relevant, so he passes the GT. So he may pass the GT. On the other hand, Yogender gave many points and he was talking continuously, so he will also pass, in the sense he's talking continuously and he's giving relevant points also. He will also pass. And then there's a Rajveer also. Rajveer is also talking. So relevance of Rajveer is also okay, but still it is to be enhanced. Deepa talked sense, but Deepa talked very, very less. So she will be ignored actually, and Shiva will also be ignored. So if you see your video and then start seeing it after every 5 minutes, and you'll find that after every 5 minutes I'm silent, I'm not talking. That means you are not you may be missed. The person may not observe you. That means what Shiva and Deepa is to do, you have to speak more. Even Rameshwar, Deepa, Shiva, you have to talk more. Now Divya was not talking till yesterday. I think now Divya has started speaking. She introduced, but the way she introduced was wrong. Divya could not speak much. हाँ सर, मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने इसको थोड़ा जल्दी कर दिया और ठीक से नहीं किया, तो उसके पॉइंट कट जाते हैं, वो ग्रुप का भी लॉस होता है. That leads to the loss of entire group. So if you cannot speak, आपने ले लिया opportunity, लेकिन then you are not talking. आपने बोला मैंडेटरी कर देना चाहिए स्कूल को, एंड गोल्ड मेडलिस्ट शुड विजिट द स्कूल. सो दीज आर नॉट द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट एक्चुअली any task. There is a way how you have to start the task, and you need to speak. So Shiva, I'm sure he has a point, but Shiva was not showing interest in talking discussion. He was largely sitting silent and listening to you. So that is Shiva will any reason for that, Shiva? Yes sir, actually I have said the points. Actually I'm not getting No, what I'm saying is, like, when you listen to others very attentively, yes sir, points pop up. It has to be link after link. Have you seen the debates on the TV or something?
they don't only speak their points, they listen to others and then they take that forward also. So you are very attentively you have to listen to others and participate. Gesture, शिवा की मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम लगी कि ये थोड़ा क्या चीज को लंबा लेके जाता है, जो पॉइंट वाली बात है उसको फटाफट बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर जब ये लंबा लेके जाता है तब क्या है इंटरेस्ट एकदम से खत्म हो जाता है बाकियों का। ये इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है पहले स्टार्टिंग में, लेकिन जब वो पॉइंट वो लाते लाते जो मेन पॉइंट लाना चाहता है वो थोड़ा लंबा बाद में लेके आता है। yes, तो ये थोड़ी सी talk very straight and main point should be spoken. And I have few doubts. Can I ask now? yes. Yeah, one thing is like, so I'm very poor in Hindi. So that is the reason I didn't understand few things. That is the reason I didn't come into conversation. So I have doubt like in GT, will they speak in Hindi or in English? Both. It is both. Because both are both are permitted. So what happens is, where is your center, Deepa? Mumbai. Mumbai even largely they speak in English. But then depends in your group who are more. I mean, if you get largely Uttar Pradesh, Bihar, you are gone. You understand? Yeah, you get actually Rajasthan, I'm worried Uttar Pradesh, about Bihar. that only. Like, see, So you can do one thing, Deepa. You can do one thing. You can speak. Okay, guys, I don't understand Hindi much. So may I request, if you're comfortable in English, can you communicate in that also? Then the responsibility largely is of those students, not yours. Okay, like can I say like that in will the observer do? Yes, actually last time what happened, there was one student in last year. I think there was one session, I think some place in Bombay only, Mumbai or something, largely Hindi speaking people, and then one fellow was English speaking. One fellow only was speaking English, and he said that the same thing happened. They started speaking fluently in Hindi. And then that fellow said, okay, friends, I'm not getting anything what you are saying because I don't understand. Yeah. And then everybody shifted to English. And after that discussion, everybody shifted to English, and they were not comfortable speaking English because they were from Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar. So they were not at all comfortable in English. So, but they started speaking in English. And then after the discussion, everybody was passed, and that observer said, why you are passed, all of you? Because you cooperated with one candidate who was not comfortable in your language. And that was a very good gesture in group task. So entire group was passed actually, only because of this good gesture. So they want that group embeddedness actually. That gesture they showed was very good. So what you can do is, if you find yourself totally isolated, then you can always say that, friends, I have a very small request to make you. I'm not getting many of your points because I'm not very comfortable in Hindi. So if some of you can speak in English, then even I can participate comfortably. So remember these couple of sentences and say that way. The moment you say that and they still don't speak in English, then their marks are lost, not yours. Okay. And you by virtue of not knowing Hindi, you get more marks. Why? Because the observer will observe. And second point is, you need not to understand them to give your point. So you can always say, so friends, I'm not getting what you're saying, but I know the topic. So this is one point. You can add this point also with you. So nothing stops you from adding your points. You can sing your own song. Nothing to worry. Even if you're not understanding what somebody's singing, you can sing your own song. And that is what I did now also. Yeah. And Deepa, in IIT Delhi, my professor PV Rao, he's a dean now IIT Delhi. He was my professor. And he was Telugu guy, he was from Vijayawada, and all his students were also Telugu or from. I was the only person who was not knowing Telugu. So whenever they used to sit, they used to talk all Telugus and all. And I used to nod like this. When they used to laugh, I used to also laugh. One day, professor said, "Are you understanding what we are saying?" I said, "No, sir." So why you're laughing? I said, "What else I am to do, sir? At least I am to also entertain myself." So when you are laughing, I am also laughing. So nothing to worry. You start singing your songs, Deepa. Nothing to worry. So whatever topic you're talking, you add a couple of sentences there, right? So that will make the main reason why I didn't participate very actively. But you could have given your points actually. Yeah. You could have given your points. And one more thing, like is conclusion is given by only one person or only one person? Only one person. And I tell you why Simran gave conclusion, because from the very beginning she was jotting down the things. Today Simran decided in the beginning that today I will give the conclusion. Am I right, Simran?
Yes, sir. She said, I'm not going to give good points, but I'm really going to write good points and conclude. And that was the reason, Yogendra said, okay, Simran, you conclude, because he was knowing that she's writing the points. That is what happens actually. If you keep on writing, and not only she was writing points, she was asking you also, okay, friends, so let's now write this point. Let's now jot down this point. Is that okay for you? So she was sort of coordinating all of you. Yeah. If you want to take that role, that is a very easy pie, So even if you don't give much inputs, conclusion is yours, right? So she was given the chance. And if one of the member is continuously, jotting down the points, then he or she will be given the chance to conclude. And that is what Simran could get. And that is good point, good strategy actually, if you follow that. Conclusion is the easiest thing in group task, group discussion, wherever. Conclusion is the easiest part actually. And once somebody has concluded, especially group task, nobody else should conclude, because that shows that you are not a group. So only one person should give introduction and another one should Yes. conclude it. Yes. So, okay. And I have one more doubt, like, Go ahead, Deepa, fast. yeah, will they give the question on the paper, or will they dictate, or how it will be? They sometimes give you entire 2-page sheet. Sometimes you have to read that. 1-page, 2-page sheet they give you, paper. Sometimes they narrate you the case study orally. Okay. Are we allowed to take pen, paper, or will they give? They give you pen and paper. Okay. Right, so that is there. They make the point very clear. They make the case study very clear to you. That won't be trouble. So we'll Very, be very getting comfortable. how much time, sir? How much time we will be getting for the? So after typical the group getting- size is 7 to 8 people and 15 to 20 minutes. Okay, for the us to think for a while. 2 minutes you 2 have minutes. been giving. Right? Typically 2 minutes. I'm giving you more time for practice. Otherwise, they give you 15 to 20 minutes. But normally in group tasks, they let you finish. They observe you, they let you finish, and then only they enter. That okay, now we concluded, then come and tell. Because time limit is not there on group tasks. They want solution. It may take more time for solution to come, but they are interested in solution. अगर भैया तो आप 3-4 लाइन का ही दे रहे हो, तो आप 1-2 पेजेस करे थे, आप बोल रहे हो, तो वैसा भी कुछ टास्क हमें भी दो इतना, ताकि हमको मालूम तो चले कितना बड़ा कैसे ऐसे सोल्व करेंगे. वो बहुत लंबा होता है. ओनली ट्रबल इज कि मेरे को पेपर में तुम्हें कैसे दूंगा वो मेरे को पता नहीं होता है. सो व्हाट आई विल डू इज नेक्स्ट, दिस इज अ गुड आइडिया, जस्ट बिफोर ग्रुप टास्क आई विल गिव यू पीडीएफ. I'll drop a PDF which you guys are to read, right? That is what, the moment it starts, I'll give you PDF. I'll send on WhatsApp. सर जो वो पीडीएफ थे ना, वहाँ से यार पीडीएफ ऐसे देखे थे, तो सर वहाँ पर तो कुछ तो ऐसे पॉइंट्स दिए हुए थे, उन पे स्टोरी बेस्ड ऐसा मिल गया था सर. हाँ, तो बहुत कुछ आता, स्टोरी भी बनानी होती तुम्हें. वो 10 वर्ड वही बोल रहा हूँ ना सर को यहाँ कि तो पॉइंट्स बोल पा रहे हैं ना सर, स्टोरी अगर एकदम से नहीं आई तो नहीं, उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है दिव्या. यू नीड टू प्रैक्टिस. समटाइम विल गिव यू 10 वर्ड्स एंड से कि इसका क्या स्टोरी बनेगा, बना के दिखाओ. डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क आर देयर. सो दिस ऑल अबाउट प्रैक्टिस. यू डू प्रैक्टिस एंड यू गेट इट. तो जितना तुम देख सकते हो उसको देखो. उस पे पैनल पे जितना ग्रुप टास्क पड़ा है ना, उसको स्टार्ट सीइंग इट. इट इज वेरी वेरी इजी, नॉट अ प्रॉब्लम. सर अब टाइम का बचा है सर मेरे पास. नो नो, यू डू दैट. कब से स्टार्ट है? हाँ, कब से स्टार्ट है सबके? जैसे कि मेरा 20 से है, तो उससे पहले किसका है? मेरा 16 को है. मेरा भी है, वहाँ मिलते हैं. मेरा भी 20 को. बिल्कुल. 19th. You will not face any trouble there. Believe me, it is very comfortable. Develop some of the tricks you develop. How to speak, how to listen others, how to give very relevant points. Be confident. Confidence matters. That's it. जल्दबाजी में कर लूं, इंट्रोड्यूस नहीं करना है. You should see what is your. लेकिन दिव्या तुम्हें पैटर्न पकड़ना है. Introduction. Light. You know what is the pattern of introduction is? Okay, friends, my name is Divya, and let me discuss with you the task which is given to us today. So friends, the task is like we want to promote culture of sports in India. So just speak out what is given in your own language. Don't start giving solution in the introduction. That is a mistake you did. In the introduction, you are to tell the task to others. So friends, what I understand is this is the topic given to us, and then you add one line. Then you say that, friends, before we find a solution to this problem, I think we should find the cause of this problem. What is the cause of this problem? So the cause is like, we don't see the future in sports in India. We don't see that.
because you know, we don't get security. So remember, we all remember when in the school we focus on other subjects which can give us job, like science, engineering, medicine, science, physics, maths, commerce. You people must have done commerce. Why? Because it gives you job of chartered accountants. Then law, it goes lawyers they go. Sports, nobody wants to go. Why? Because you may not get the career out of that. And it's a tragic in India that if you become MLA even for one day, you get pension for entire your life. Yes, If you become MLA twice, do you know how many pensions do you get? 2 times. 2 times. And if you become MLA 3 times, how many pensions? 3 do you times. get? 3 times. Have you ever seen this situation anywhere in the world? And you know, there was, I tell you, interesting that there was ex-chief minister of Punjab, Prakash Singh Badal. Aam Aadmi Party defeated them in Punjab. That gentleman contesting election of MLA at the age of 90, and it was his 7th time or 8th time. And 7 times he became MLA. 3 times he became chief minister, 7 time MLA. Then he lost. When he lost, you know how much pension he was getting? 1 time pension is getting 80,000-90,000, and he was 7 time MLA. 5.6 lakh pension only because he was MLA for 7 times. Here you are saying that MP बन जाते हैं सर, MP बन जाते हैं तो उसके बाद में MP वाले भी अलग मिलती है उनको. MP और MLA I'm saying, no, you become MLA for 1 day, you get pension for entire your life. अच्छा बिजनेस है वैसे. हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम पे वो ऐसे ही message is become MLA for 1 day. So that is what. And another story you listen now. This Olympics contingent of India which went, नीरज जिसमें चोपड़ा को मेडल, नीरज चोपड़ा, उसमें 300-250-300 लोग थे. मेडलिस्ट कितने होंगे? बहुत ही कम. जो मेडलिस्ट नहीं थे, the people who could not get any medal, just think of what they have got. अरे those 300 people out of 130-50 crore people, they've gone to Olympics. Don't you think they deserve pension at least? Tell me now. If you become MLA for 1 day, you get pension for entire life. If you go to Olympics, you are among 300. And let me tell you, there are 500 more than 500 MPs in India. MLA, there are thousands of MLA. But if you are among 300 sports person best in India, if you don't get medal, you get nothing. Tell me, will you ever take that chance to fight so much and go to Olympics and get nothing out of that? Now, when you are back, getting after no medal, you are thinking, what should I do now? I mean, should I open shop, or should I, what should I do for my living? It's better I should have done commerce and become chartered accountant and open my, that is how it goes. I should have become engineer, I should have become doctor, I should have become chartered accountant, lawyer. At least I should have fed my family. I became sports person, went to Olympics, and now I'm dying out of hunger. I'm not doing any job. That is the trouble actually. So entire planning is from there. Top-down approach is required. I think I'm getting late for the next slot. So this is how it is to be done. So we meet tomorrow also with the next task. You just कोशिश करना वो 2 पेज वाली करवाने की. हाँ, मैं ट्राई करता हूँ आपको 2 पेज वाला भी देने का. कल आपको PDF के थ्रू I'll give, right? Okay. चलो, I end it up this session now.